Well, with the COVID-19 situation remaining grim in the national capital, the Arvind Kejriwal government has extended the extended ongoing lockdown for another week. Chief Minister Kejriwal, while addressing a press conference today, announced that lockdown in the capital had been extended till 5 a.m. on the 3rd of May. He's also claimed that Delhi's positivity rate has reduced slightly amid the lockdown that's been in place since the 19th of April. In this lockdown, essential services are allowed. Public transport are allowed to ply, air and railway travel is also permitted. Home delivery from restaurants are also permitted, and people are also being allowed to move for accessing health services. The Delhi government decided to impose the lockdown to curb the spread of the virus in the capital. However, the COVID-19 positivity rate has come down to 29% today. Till yesterday, Delhi was reporting over 30% in Delhi. That's the positivity rate. And the number of fresh cases continues to rise. The capital has recorded over 24,000 new cases in the last 24 hours. अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। Well, after Delhi High Court's whip on the Arvind Kejriwal government and the centre over shortage of oxygen in the national capital, the Aam Aadmi Party government is once again caught in a soup over mismanagement. Oxygen suppliers have now blamed the Delhi government of not guiding suppliers on the logistics. The suppliers have said that oxygen allocations have been given by Delhi government to 12 suppliers, but they are not told which hospitals to deliver to. Oxygen suppliers have also written to the Arvind Kejriwal government asking for clarity on the same. With a huge oxygen crisis looming over the national capital, mismanagement over internal logistics on the part of Delhi government is not acceptable at a time when people are gasping for breath. दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। Well, is India gas for oxygen? Politics over oxygen cylinders only escalating now. Chief Minister Arvind Kejriwal has written to all chief ministers requesting them to provide oxygen. In his letter, he said, although the centre has extended help, but resources are proving to be inadequate. Union Health Minister Harshvardhan has hit back at Kejriwal, saying that Delhi has been given more quota of oxygen than it had asked for, and now it is up to the state government to utilize this quota. Meanwhile, Congress has blamed the centre and the Delhi government alike for this crunch. The Grand Old Party's General Secretary Ajay Maken said the Parliament Standing Committee for Health and Family Welfare had advised the centre to maintain the oxygen supply in hospitals in the month of February itself, yet no action was taken. अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है,
अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है, ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। जो 1 साल आपको वक्त मिला था पिछले साल कोविड से लेके इस साल कोविड तक, आपने कुछ क्या नहीं किया। अब आपको लेटर लिखनी पड़ी, और ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपने सारे स्टेट्स के सीएम्स को लेटर लिखी है और ये बोला है कि हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। तो वो 7 ऑक्सीजन प्लांट जो आपने लगाने थे, 8 में से जो 1 ही लगा है, उसका क्या हुआ। ये बहुत नीची राजनीति है, और ये राजनीति से सिर्फ लोगों को सफर हो रहा है। लोग ही सफर कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। ये 21 नवंबर 2020 को ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर चेयरमैन राज्यसभा को दी गई और फरवरी के अंदर ये पार्लियामेंट के टेबल पे रखी गई। तो आज हमारे देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो जाए और समय रहते उनको चिताया गया। यही मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 190 पेज की रिपोर्ट में जहां पे ऑक्सीजन 40 बार मेंशन किया गया है, इसके अंदर समय रहते हुए हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को चिताया था बार बार कि आप इसको ठीक करिए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं। Well, 551 oxygen generation plants are going to be set up in public health facilities across the country through the Prime Minister's CARES Fund. Oxygen generation plants will be set up in government hospitals. The Prime Minister has directed that these plants should be made functional as soon as possible. The Prime Minister's CARES funds had earlier this year allocated 201 crores for installation of additional 162 dedicated pressure swing absorption or PSA medical oxygen generation plants inside public health facilities in the country. Well, most of the vaccination centers in Mumbai are out of stock. BMC claims not enough stocks have been provided. Out of the 73 vaccination centers, only 37 are functional today, but with limited stocks. Senior citizens suffer the most. No walk-in vaccination is happening as only registered people will be given this shot. Most of the senior citizens had to take their second dose. Senior citizens have claimed they are suffering in the situation. Officials should have informed them earlier, they say. Arguments also broke out with cops and officials at the BKC vaccination center, which is the biggest in Mumbai. Due to non-availability of vaccines, today BKC vaccination center will be closed till vaccines are available. All the citizens are hereby requested to wait for the information from Municipal Corporation and Government of India for further. We regret for the inconvenience due to non-availability of vaccines. My brother has come all the way from Mulund. He said, Sundar, here it is available. You can definitely take the second dose. But unfortunately, today I have come. It is saying no vaccine. Vaccines are out of stock at BKC. वैक्सीन मिलता नहीं है। कल भी हम लोग आके चले गए शाम में, और आज भी आए। आज भी सुबह ये लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन बिल्कुल नहीं है करके, और प्राइवेट में दुनिया भर का वैक्सीन दिया हुआ है। तो दे आर टेलिंग टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड टेक द वैक्सीन। फ्रॉम वेयर विल ब्रिंग द मनी? पैसा कहाँ से लेके आएगा? 1200 रुपया हम लोग, पैसा होना चाहिए ना। At a time when cases of coronavirus is at peak in our nation, at a different side in Mumbai, vaccines are not available. Here we are right now present at BKC COVID Centers vaccination center, and this is one of the largest vaccination centers of Mumbai. But here in the boards you can clearly see vaccine is out of stock. There are now very senior citizens who have come over here for vaccinations, but they are very angry that now vaccines are not available. Many of them now, BMC officials are clearly letting us that most of the vaccination centers in Mumbai today are shut down due to unavailability of vaccine. The BMC is claiming that they have not received their stocks of vaccine from the center, but whatever may be the reason, the people of Mumbai are very angry as vaccines are not available for them. With camera person Samir Shanbag, this is Saurabh Akhtania in Mumbai for India Today. There is a mess whichever way you look, be it vaccines, be it hospital admissions, or be it supply of essential drugs in the country. You're dealing with the worst pandemic. Meanwhile, other Congress-ruled states have also said that there is a vaccine crunch, announcing that they will not be able to roll out the vaccine for all from the 1st of May.
The concern over vaccinations were raised in a meeting of health ministers of Congress-ruled states Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh and ally-ruled Jharkhand. Punjab government has said they have only 4 lakh doses. Chhattisgarh says the situation there is even more dire. Rajasthan has informed that Serum Institute officials have told them the consignment will only reach by the 15th of May, almost 2 weeks after the universal vaccination drive begins. वैक्सीनेशन जो हमारे पास आज तक सिर्फ 34 लाख हमारे को डोजेज मिली हैं, जिसे 30 लाख को हम यूटिलाइज कर चुके हैं और सिर्फ 4 लाख हमारी डोजेज हमारे पास बैलेंस है। ये आज का दिन हमारा निकलेगा और पर डे 1,90,000 लाख लगा रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा सप्लाई नहीं। राजस्थान में 2 करोड़ 9 लाख है। इन सारे लोगों को अगर 7 लाख डोज पर डे हम दें तब भी 1.5-2 महीना लग जाएगा इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेट करने में। सवाल ये कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, फिर हमने भारत सरकार को कहा 1 लाख वैक्सीन बच गई, फिर उन्होंने 10 लाख भेजी, फिर 4 लाख भेजी। इस ढंग से आज हमारे पास जो स्टेट में अलग अलग जिला चिकित्सालय है वहाँ करीब 7 लाख वैक्सीन है और हमारे जो कैपिटल में स्टोरेज का सेंटर है वहाँ 1 लाख वैक्सीन है। टोटल 8 लाख वैक्सीन है। 18 से 45 साल की आयु वर्ग की जो हमारी आबादी 35 से 40% की अगर हम मानते हैं, उनके लिए आधी कैपेसिटी यानी केवल 3.5 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखिए स्थिति क्या बन रही है। मैंने सुना कि असम ने अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया वैक्सीन का, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने बना रखी है। न केवल असंतुलित और अस्वीकार्य रेट बनाए हैं, सप्लाई नहीं है और अगर ऑर्डर देने के लिए कहा जा रहा है तो फैक्ट्रियों के पास सामान नहीं है पूरा करने के लिए। Well, days before India launches vaccine drive for citizens above the age of 18, the prices of jabs are finally out. Bharat Biotech has announced the prices of Covaxin. The nation's indigenous vaccine is going to be sold at 1,200 rupees per dose in private hospitals, while state hospitals will be selling this at 600 rupees a dose. Serum Institute of India and Oxford University's AstraZeneca's vaccine, that is called Covishield in India, will be sold at 600 per dose in private hospitals, while state hospitals will be paying 400 for every dose. Bharat Biotech claims the vaccine candidate is expensive than its competitor because of its low process yields. The institution further says the development, manufacturing and clinical trials expenses incurred by the firm itself and not by the ICMR or the government with whom they have a tie-up. On the 1st of May, India is going to be opening the drive for all above the age of 18, essentially all adults in the country. Two major steps what the government of India has taken is to give the approval to Sputnik V production in India. It has been tested in India by Dr. Reddy's laboratory and it is likely to come very soon, maybe to a couple of months it should be there in the market. Secondly, about the Covaxin production also, Government of India has given the permission to Haffkine Institute to produce more number and Bharat Biotech has been given support to produce more numbers of vaccines so that in the coming days the whole of the Indian population can be vaccinated. Well, after Serum Institute of India announced the price of Covishield, now Bharat Biotech has also announced the price of Covaxin ahead of the 1st May vaccination. And you can see that Covaxin is being sold at 600 rupees to the states and 1,200 rupees to the private hospitals or private facilities. The price difference between Covishield and Covaxin is double because Covaxin is being sold at 1,200 to private hospital while Covishield is being sold at 600. And to states, the vaccine manufacturer Serum Institute of India is providing the vaccine at 400. Now, already Serum Institute has been in the eye of storm of the center as well as the state because the allegation is that the vaccine manufacturers are giving the vaccine cheaper to the central government. 50% of their doses have to be earmarked for the central government and 150 rupees a dose. So Bharat Biotech is also selling at the same price point, 150. But the allegation of the state governments has been that why is there this dichotomy of pricing
for state procurement of vaccines as well as the center. Now, we'll have to wait and see what the response on Bharat Biotech's prices, because it is double of what Covishield is charging at this point of time. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.